Hi guys, welcome to Study Swexit. I am Pritam Paul, a second professional MBBS student from Bardhaman Medical College and Hospital. So today I will discuss the AIIMS cutoff, all the AIIMS in India till now, those which have established. I will also discuss the reputed AIIMS, the new AIIMS which have formed, all the AIIMS cutoff, and it will be round two cutoff. Okay, round two means last round cutoff. Okay, last round cutoff, and it will be category wise. I will cover the unreserved category, OBC, SC, ST, EWS category cutoffs. So it will be all the aims. And so who am I? I am Pritam Paul, I'm a second professional MBBS student at Bardhaman Government Medical College and Hospital. I'm also a NEET mentor at Physics Wala. My NEET 2020 score is 605 out of 720. I got 96.4 percentile in JEE Mains. I was also qualified for JEE Advanced. I was also qualified for IISER Bhopal. My ICA rank, All India rank was 1455, and my India All India rank was 380. And I cracked all the exams, NEET, JEE, NDA, SSB as a freshers. So मैं इतना कुछ क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज देखो मैं फ्लेक्सिंग नहीं कर रहा हूँ। हाँ भैया फ्लेक्सिंग कर रहे हैं इतना कुछ बोल के नहीं। बात है कि आपको ऑल एम्स कट ऑफ ऐसा वीडियो यूट्यूब में हजार हजार मिल जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सब एम्स का कट ऑफ 650 के ऊपर रहेगा। नो, दिस इज नॉट द ट्रूथ। आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड आई नो a bit clearly than others, those who are giving the fake cutoffs. So for this reason, I am telling that मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं ये सबसे गुजार चुका हूँ, मेरे को थोड़ा पता है, मेरे को विश्वास करो, ओके? सो लेट अस डिस्कस। हाँ, डिस्कस करने के पहले आई हैव मेड ऑल द एम्स कट ऑफ द 20 एम्स, ऑल द कट ऑफ इन वन सिंगल वीडियो एंड आई विल कवर दिस। सो शुरू करने के पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। बोलना तो हर वीडियो में नहीं बोलना चाहता हूँ, बट फिर भी बोल ही देता हूँ। जो लोग आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, नॉट सब्सक्राइब्ड 98.5% और सब्सक्राइब सिर्फ 1.5%। ओके, तो ये नाइंसाफी मत करो यार। थोड़ा 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 दिक्कत होता है सब्सक्राइब बटन में क्लिक करने के लिए, बट हाँ, उतना कर लो। मैं इधर रात 2 बजे, रात में इधर 2 बज रहा है, कुत्ता भौंक रहा है बाहर में, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप तो इतना कर ही सकते हो मेरे लिए। चलो, सो लेट अस डिस्कस। देखो, कोई भी अगर बोलता है कि कट ऑफ यही होगा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कट ऑफ कोई भी सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मतलब एक्चुअल कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट, वी कैन प्रेडिक्ट अ रेंज, वी कैन प्रेडिक्ट अ रेंज। हाँ, कि कट ऑफ इधर से इतना तक लाई करेगा, जो कट ऑफ है इसके अंदर ही लाई करेगा, दिस वी कैन प्रेडिक्ट। बट मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता हूँ कि यही कट ऑफ होगा। अगर कोई बोल रहा है एक्स यही कट ऑफ है, ये कोई नहीं बोल सकता। अगर बोल रहा है तो गलत बोल रहा है बंदा, ठीक है? वी कैन प्रेडिक्ट द रेंज एंड द रेंज आई हैव प्रेडिक्टेड इज +-5। ओके, +-5 इसके अंदर ही कट ऑफ रहेगा, ऐसा ही कट ऑफ रहेगा। हाँ, +-5 हो सकता है। So I've covered all the AIIMS in single video. So first, let us start with the AIIMS Delhi. AIIMS Delhi is a most prestigious college, medical college of whole India. And मेरा एक वीडियो भी है regarding a student who is now pursuing MBBS in AIIMS Delhi. सोमोदी फल्दर, he was the NEET topper of West Bengal. वो वीडियो जो लोग अगले साल नेट के लिए तैयारी करोगे, वीडियो मस्त देख लेना, ठीक है? एक डिटेल इंटरव्यू है, टॉपर का माइंडसेट क्या होता है, टॉपर का स्ट्रेटेजी क्या होता है regarding that. Okay, so the AIIMS Delhi, its cutoff for the general category will be 700. Okay, 700 cutoff होगा ही। EWS it will be 695. For OBC it will be 690. Okay, for SC it will be 677. For ST will be 656. देखो कितना हाई कट ऑफ हो रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि एम्स दिल्ली का कट ऑफ घट सकता है। नो, 700 से कम एम्स दिल्ली का कट ऑफ हो ही नहीं सकता है, ठीक है? बिकॉज इट इज द मोस्ट डिमांडिंग एवर कॉलेज इन इंडिया इन केस ऑफ एमबीबीएस। एंड इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना अच्छा पेशेंट लोड है, सब कुछ इतना अच्छा है, कोई क्यों छोड़ के दूसरे कॉलेज में जाएगा? दिस इज द सिंपल लॉजिक ना। हाँ, बहुत लोग का होता है कि मेरे को एक एम्स लेना ही है, ठीक है? मेरे को एक एम्स लेना ही है, और कहीं ना कहीं एम्स जो टैग है वो मैटर करता है। बिकॉज हम लोग जब डॉक्टर, देखो हम लोग को पता है कि एमबीबीएस डिग्री कहाँ से भी करो वो ऑलमोस्ट इक्वल है, बट दिस इज फॉर एजुकेटेड। जो लोग विलेज से आ रहे हैं, जो लोग थोड़ा डाउन ट्रोडन है,
वो लोग को एम्स टैग का बहुत वैल्यू होता है। मतलब अगर दो डॉक्टर चेंबर खोले हैं, बाजू में है दो डॉक्टर के चेंबर, एक है एमबीबीएस एम्स और एक है एमबीबीएस, तो ऑब्वियसली वी पीपल विल प्रेफर टू गो टू द एमबीबीएस एम्स डॉक्टर, बिकॉज एक माइंडसेट बन गया हम लोग का कि एम्स का डॉक्टर मतलब बहुत अच्छा डॉक्टर। ठीक है, तो एक पेशेंट मतलब आफ्टर योर कैरियर, देखो एमबीबीएस अगर कोई भी जगह है ऑलमोस्ट सेम ही है, बट यस एम्स का टैग मैटर करता है। ठीक है, चलो एम्स दिल्ली। तो सेकंड द एम्स भुवनेश्वर, it is the best ends of the East. Okay, so general cutoff will be 685, EWS cutoff will be 668, OBC cutoff will be 669. Okay, and SC cutoff will be 634, and ST cutoff will be 589. So after that, AIIMS Jodhpur, the general cutoff will be 684. The EWS cutoff will be 674. The OBC cutoff will also range like 674. The SC cutoff will be 634 and the ST cutoff will be 520, 529. Okay. After that, we come to the AIIMS Bhopal cutoff. The general cutoff will be 683. The EWS cutoff will be 672. Okay. The OBC cutoff will be also 672. The SC cutoff will be 631 and the ST cutoff will be 602. Okay. देखो, these are the premier aims. These are the premier aims. मतलब ये सबका डिमांड बहुत ज्यादा होता है। ये जो एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, ये चार एम्स का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बिकॉज इट्स दे आर द मोस्ट ओल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एम्स एंड सबसे ज्यादा वैल्यू ये लोग को लोग करता है। ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए पर करता है लोग। ठीक है, तो ये लोग का कट ऑफ वेरी हाई जाता है। दिस आर द 5 सेट्स 4 सेट्स ऑफ कॉलेज। देखो कोई भी टॉपर पहले चार ये मतलब जो चॉइस फिलिंग होता है पहले चार में ये दे देता है। ओके, उसके बाद वो देता है एमएमसी, यूसीएमएस और जो अदर दिल्ली कॉलेजेस है, एंड उसके बाद बाकी एम्स को देता है। ठीक है, तो इसलिए एक देखो एक ह्यूज ड्रॉप है, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का ड्रॉप है इधर फॉर दिस रीजन। तो आफ्टर दैट आता है एम्स Raipur. Its cutoff will be like for general 674, for EWS 641, for OBC 664, SC 554, and ST 575. For AIIMS Nagpur, the cutoff will be open 672, EWS 660, OBC 663, SC 602, and ST 563. For AIIMS Patna, the open general category 669, OBC 664, sorry, EWS 664, OBC 659, SC 570, ST 464. For AIIMS Bhatinda, it will be general 666, EWS 650, OBC 656, SC 587, and ST 551. For AIIMS Gorakhpur, the general cutoff will be 660, the EWS cutoff will be 656, the OBC cutoff will be 649, the SC cutoff will be 521, the ST cutoff will be 467. For AIIMS Kalyani, the general cutoff will be 659, the EWS cutoff will be 651, the OBC cutoff will be 640, the SC cutoff will be 532, and ST cutoff will be 517. Okay. Then for AIIMS Rishikesh, the general cutoff will be 659, the EWS cutoff will be 665, uh, the OBC cutoff will be 659, the SC cutoff 619, and ST 596. For AIIMS Bilaspur, general 656, EWS 652, OBC 641, SC 574, ST 528. For AIIMS Mangalagiri, the general cutoff 655, EWS 654, OBC 637, SC 574 and ST 455. ये जो है इसका PDF I will share in the Telegram group. So don't forget to join the Telegram group. Okay, okay. चलो, after that आ जाते हैं हम लोग एम्स एम्स जम्मू में। देखो इधर भी एक ह्यूज ड्रॉप है, इधर भी एक ह्यूज ड्रॉप है। ओके, इधर भी एक ह्यूज ड्रॉप है ऑफ अप्रॉक्स
6 मार्क्स का। ठीक है, ये लोग ऑलमोस्ट सेम है, ये लोग ऑलमोस्ट वेरी लेस कट ऑफ डिफरेंस। इधर क्यों इतना? बिकॉज दिस आर द न्यू एम्स। ये जो है इधर एम्स, starting from AIIMS Raipur to AIIMS Mangalagiri, this is the kind of old AIIMS, almost 10 years हो गया। एंड दिस इज द एकदम, ये जो है एकदम एम्स जम्मू, एम रायवेली, एम्स देवघर, ये जो है एकदम नया एम्स है, इसलिए इन लोग का कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज होता है। लाइक दैट कि एम्स जम्मू का कट ऑफ फॉर जनरल विल बी 649, ईडब्ल्यूएस 626, ओबीसी 627, एससी 517, एसटी 504। एम्स रायबरेली जनरल 649, then EWS 631, OBC 644, SC 514, ST 462. For AIIMS Devgar, the general cutoff will be 639, EWS cutoff 644, OBC 629, SC 508, ST 459. For AIIMS Bibinagar, general cutoff 639, EWS 635, OBC 634, SC 567, and ST 532. For AIIMS Rajkot, the general cutoff 638, EWS 629, OBC 639, SC 544, and ST 478. For AIIMS Guwahati, the general cutoff 637, EWS 641, OBC 629, SC 505, and ST 459. For AIIMS Madurai, and this is the last candidate with the lowest marks getting an AIIMS is the AIIMS Madurai. The cutoff was 624 for general, 624 AWS, OBC 621, SC 505, ST 459. सो देखो राउंड वन का कट ऑफ, अब बहुत लोग मेरे को कमेंट करेगा, मैं श्योर कि इतना कम एम्स का कट ऑफ नहीं गया था, अराउंड 650 कट ऑफ किए थे। यस, for round one the cutoff was 650, for round one the cutoff was 650, but after that the last round तक, round 4 तक डिक्रीज होते होते, मॉप अप तक डिक्रीज होते होते 624 जो कैंडिडेट लास्ट किया था। पिछले साल 625 हुआ था, इस साल थोड़ा सीट इंक्रीज कर रहे हैं, तो थोड़ा कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है। बट द सेफ स्कोर टू गेट एम्स फॉर जनरल कैटेगरी विल बी 630। अगर आप एम्स में जाना चाहते हैं, अगर आपका मार्क्स 630 से ज्यादा है, देन आप पकड़ सकते हो, कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। ओके, चलो। सो लेट अस डिस्कस फाइनली द सेफ स्कोर टू गेट एम्स। बहुत लोग का ऐसा एम रहता है कि मेरे को पढ़ना है तो एम्स में ही पढ़ना है, तो वो लोग के लिए ये है कितना सेफ स्कोर में आपको एम्स मिल जाएगा। देखो, राउंड वन में हाई कट ऑफ रहता है, अराउंड 650 कट ऑफ रहता है। ओके, तो राउंड वन में आशा मत करो कि एम्स मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, 650 से मार्क्स ज्यादा है तो मिल ही जाएगा, बट हम नॉर्मल कैंडिडेट की बात करें तो लास्ट राउंड में, मतलब अप टू लास्ट राउंड तक, मतलब फोर्थ राउंड, और उसके बाद मॉपअप देखो लक होता है, मॉपअप में तो मैं इनकरेज नहीं करूंगा मॉपअप के लिए, बट लास्ट राउंड तक कट ऑफ डिक्रीज होता है एंड कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज होगा ही। ठीक है, तो व्हाट विल बी द सेफ स्कोर? देखो, पिछले साल एम्स मदुराई नया ओपन हुआ था, इसलिए उसका क्रेज थोड़ा कम था, बट आई इस साल आई गेस ये जो होगा कट ऑफ, it will go around 630. Okay, so for general the cutoff for general candidate to get AIMS, you have to score 630 plus. If you're EWS candidate, if your score is 620 plus, then you are in a safe position to get a seat in AIMS. If you are OBC caste, then you have to score almost 622 plus to get surely an aim seat. For SC, the safe score is 510, and for ST, the safe score is 460. So अगर इतना आपका मार्क्स होता है, इतना आपका मार्क्स है, then you can think yes, a aim seat a aim seat is sure. तो बेस्ट ऑफ लक। जो लोग को नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, आपका स्टेट का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। वो देखो, एमबीबीएस कहाँ से भी करो, उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, बिकॉज आफ्टर ऑल इफ यू वांट टू सेटल इन ए गुड मेट्रो सिटी, आपको एमडी करना ही है, आपको मास्टर डिग्री करना ही है। हाँ, तब कॉलेज थोड़ा मैटर करता है, बट एमबीबीएस इज ऑलमोस्ट, देखो, हाँ, एक बात होता है ना, 19-20, वैसे ही
एम्स ऑब्वियसली एम्स का टैग मैटर करता है, बट अगर नहीं मिल रहा है, आपका मार्क्स थोड़ा कम है, देन डोंट बी सैड। आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा स्टेट में, यही बड़ा बात है। बहुत लोग को 20 लाख बच्चा देता है, 1 लाख कॉलेज मिलता है, 19 लाख को कुछ मिलता ही नहीं है। लोग ऐसे घर बैठे रहते हैं। आपको कॉलेज मिल रहा है, इसकी खुशी में आप सेलिब्रेट करो। आप दुख दुख मत पाओ, बिकॉज after going into a medical college, you will get a lot of opportunities to excel yourself. So best of luck, and I guess everyone is enjoying this time after the NEET, and keep enjoying, keep rocking. Bye. This is signing off from Study Success. Har Har Mahadev.